वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज का पार्ट 7, जिसमें आज हम स्पेसिफिक टॉपिक कवरिंग करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस लेक्चर में जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर से होंगे। और ये जो सारे एमसीक्यूज है ये बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंटरनल ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, यूजीसी नेट, इन सब के लिए जिनमें अकाउंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, फ्यूचर कॉस्टिंग, प्रेजेंट कॉस्टिंग या फिर जॉब कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक स्टैंडर्ड को सेट कर देते हैं और फिर जो कंपनी अपने एक्चुअल काम करती है उसको बनाए हुए स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हैं और फिर जो भी डिफरेंसेस होते हैं उन्हें एनालिसिस करते हैं और उस डिफरेंस को कहा जाता है वेरिएंस। सो बेसिकली जो ये वेरिएंस है इसे मैनेजमेंट की हेल्प की तरफ से सही किया जाता है ताकि इन फ्यूचर जो है ऑर्गेनाइजेशन के काम को बेटर किया जा सके, प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके, कॉस्ट को डिक्रीज किया जा सके। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट अकाउंटिंग की जो टेक्निक है वो यूजफुल होती है फ्यूचर कॉस्टिंग के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिन, कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस या फिर लॉस। जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का उसे कहते हैं हम वेरिएंस। सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which of the following is not a type of variance? Material variance, labor variance, overhead variance, inventory variance. Variance 3 types के होते हैं, that is material, labor and overhead. और उन्होंने पूछा not a type of variance, so here the correct answer is D, inventory variance. Question number 4 is, a favorable variance occurs when actual cost is more than standard cost, actual cost equals standard cost, actual cost is less than standard cost, sales are low. एक फेवरेबल वेरिएंस कब अकर होता है? जब जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से लेस होती है। सी इज द करेक्ट आंसर, एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज material price variance is calculated using standard rate into actual quantity, standard price minus actual price into actual quantity, standard price minus actual price into standard quantity, standard quantity into actual rate. सो आपको बताना है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है। बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर देते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which of the following is cause for material usage variance? Change in labor rate, change in material mix, increase in overhead, inflation. इनमें से कौन सा है जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस को कॉज करता है? सो मटेरियल है तो मटेरियल ही चेंज करेगा, उसे चेंज इन मटेरियल मिक्स इज द आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू ओवरटाइम, आइडल टाइम, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आवर्स, बोनस पेड। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो कब अराइज होता है? जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स में डिफरेंस होता है। वेरिएंस का मतलब ही वही होता है, जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है वो होता है वेरिएंस। यहाँ पूछा गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सो डिफरेंस इन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड आवर्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल फॉर जॉब कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल किस चीज के लिए? इट इज सुटेबल फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेरिएंस इज रिलेटेड टू आइडल टाइम? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस। इनमें से कौन सा वेरिएंस है जो आइडल टाइम से रिलेटेड है? सो हियर आइडल टाइम वेरिएंस is related to idle time. C is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरहेड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड वेरिएंस जो है वो किसका डिफरेंस है स्टैंडर्ड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट direct and indirect cost sales and cost so here the correct answer is standard overhead and actual overhead A is the correct answer next question is which of these is not an advantage of standard costing इनमें से कौन सा advantage नहीं है standard costing का helps in cost control simplify inventory valuation ensure actual cost is always lower provides basis for budgeting so here the correct answer is standard overhead and actual overhead स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कौन सा है जो आंसर नहीं है इंश्योर करना कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमेशा लेस ही होगी कोई एडवांटेज नहीं है इसका सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएंस एनालिसिस इज यूजफुल फॉर टैक्स प्लानिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एसेट रिवैल्यूएशन पेरोल प्रोसेसिंग सो हियर द वेरिएंस एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इट इज यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वेरिएंस एनालिसिस यूज किया जाता है Next question is a standard cost card contains list of assets, standard cost components per unit, historical cost data, bonus information. That is standard cost components per unit. B is the correct answer. Next question is material mix variance arises when actual cost exceeds standard, actual mix is different from standard mix, total usage is incorrect, price fluctuates. मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है वो कब अराइज होता है व्हेन एक्चुअल मिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबर रेट वेरिएंस इज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल वेज रेट मटेरियल शॉर्टेज increased depreciation so here the correct answer is difference between standard and actual wage rate B is the correct answer. Next question is ideal standards are achievable in all conditions, based on perfect conditions, average of past cost, set by top management. Ideal standards क्या होते हैं? That is based on perfect conditions. B is the correct answer. Next question is which of the following is not a component of total material cost variance? Material price variance, material usage variance, material mix variance, labor efficiency variance. So here the correct answer is labor efficiency variance. D is the correct answer. Next question is fixed overhead variance includes expenditure and efficiency variance, capacity and volume variance, volume and expenditure variance, rate and mix variance. So here the correct answer is volume and expenditure variance. C is the correct answer. Next question is variable overhead efficiency variance arises when rate of variable overhead changes, actual hours differ from standard hours, fixed cost changes, sales price changes. So here the correct answer is actual hours differ from standard hours. B is the correct answer. Next question is what is the main objective of standard costing? Recording financial transactions, controlling cost, reducing tax liability, preparing final accounts. Main objective होता है standard costing का controlling cost. B is the correct answer. And this is a bonus question for you. Standard costing is generally not used in chemical industry, textile industry, software development, cement industry. You have to answer the question in the comment section below. So this is all about this lecture. Thank you so much for watching. Please do like and share this lecture and subscribe to the channel Mastering Commerce Academy. Thank you so much.